Right. So yeah, we created a one-dimensional array. I gave you ideas on how we could do this. So this is how the array was done. And then I showed you another example where we stored different questions inside this array. The other thing we did was, by the way, I didn't put a semicolon here. It should have been there already. Okay, the other thing we did was we tried the set interval function to call another function at a certain interval. We tried that, and we even, just to contain this function or give it an identity, we declared a constant variable called myTimer and made it equal to the set interval. So in other words, if you would call myTimer, it basically would run the interval function. And the reason we did this was because somewhere down in the program, we wanted to stop the timer. And in order to stop the timer, it only accepts the name of the, the object or variable that has been attached to the function. So in this case, we had to say clear interval myTimer, and it would stop that. Now, in today's class, we were gonna do this thing which I told you earlier. And basically I was thinking, let's make a quiz program together, like me and you, we're gonna work on this quiz program. So we're gonna like mostly code it together. So how do you like that idea? Sure, that sounds great. Yeah, so I mean, I was thinking let's do it from scratch, and this way both you and me will keep on rehearsing all the different Java code programming syntax and formations, and in this way we'll also know how much we both know about JavaScript. Sure. So that's what I'm planning to do right now. So I'm going to close all these programs that we have open, and let's start a new file. Okay, and I'm going to save this file as okay, so there's too many files in one folder now, so I'm going to create a new folder, and I'm going to call this folder quiz. Okay, so inside this, I'm going to create my Java quiz dot. Okay, so first I'm going to create the HTML file, java quiz.html. Right, so just to start with, I mean, I'm sure, I mean, just to start everything, let's just get some of these things on the screen, the basics. Yeah, and then, so if I want to, so at one point we would like to have a CSS. So maybe we'll do that too. Have a CSS that describes how the page would look. Would you like to do inline coding or separate in a Java file? Separate, I would say. Separate, yeah, that's better. Okay. Yeah. Let's call it quiz.js. And there's my script. I might include the CSS file later, or I could just introduce it now if you want. Just do it later. Okay. All right. So for this program, what do we need? What we really do we require here to start our program? This is the HTML page. Set of questions should appear. Okay, so if we could probably have a title or something. Yeah, let's put a heading using H1. And so there's a heading, and then let's create a slightly smaller heading and call this one nothing actually, because we're gonna, I mean, I can just write question here for reference, but we're gonna update the questions using the code, okay?
Yeah. And I'm going to add a div here. And this div is going to basically contain the different options that I want to display on the screen. This H2, I would like to assign it an ID called question. And similarly, for this div here, let's assign it an ID called options. So what do you mean by options? What kind of options would you Yeah, include? so I mean, the quiz that we're creating is probably it's going to be a multiple choice question quiz. So we're going to display Okay. a certain amount of options for the MCQs, All right. and then the candidates can simply just type the select the answer, Okay. right? So we can even do this using a form, right? Yeah, you're right. We can. But that wouldn't use JavaScript. Okay. Uh, Actually, JavaScript can manipulate anything, any element. So what I'm thinking now is that you're 100% right. The submit button could be used, and that would work pretty well. But right now, let me see what we can do if we, because I want to do this mostly by programmatically updating the questions and even trying taking the options from the user. So that's what All I'm right. thinking. Let's see. Um, right, I think that's pretty much it. We might need a place to update the user's response to if they're doing right or wrong. So maybe have another div here. This one, I think we can just say that questions correct. And for this one, let's do a span. Correct. Okay, so correct answers. And this would be 0 of 0 initially. And let's just close this div. 0 of 0. Yeah, so just displaying something right now. I mean, we're gonna have to do all of this using JavaScript anyways, update everything, like total number of questions. Okay, we're gonna, for example, the 3 questions, or it's gonna be 0 of 3 and so on. So this is just like a reset initialization for this page. All right. Okay, and I mean, This is just a that's basic format. it's just a Basically. very basic page right now, to be honest. There's not much in there. But let's now add our JavaScript, because that's where everything's going to start. So save as quiz.js. I hope quiz was in small letters. Yes, quiz.js. Okay. Now, so okay. So first thing I'm going to do is I'm thinking let's define our questions. Yeah. And You in can order do to that define our using array. questions, yeah, I mean, in order to define our questions, so I'm going to use an array, but this time it's not going to be a single dimension array or a 1D array. It's going to be a multi-dimensional array. So in order to start a multi-dimensional array, this is one way of doing it. There are many other ways of doing it, but this is how I'm going to do it. So what's the difference between them? Could you explain that? yeah, okay. For that, let me open up Excel for just for a moment, just to explain something to you. Now, if I had something called a question array, and this question array, Okay. could you just hold on? I'm getting a call from someone. Just a sec. Sure. Ji, Assalamu alaikum. Hello, Assalamu alaikum.
Hello? Hello? Yes, sir. Yeah, okay. So previously, say we had an array and we had 5 elements in there. So this is what the array was like. It had question 0, and then we had a question in there. What is the name of the founder of Pakistan, for example? And then we had another question in there. What is which city? Which city did artists start? Um, what's Bill's favorite color? Okay, so I'm just keeping it to 3 for now, just to make things simple. So there are 3 elements in a single dimensional array. Now, if you want to add more dimensions, and we do need more dimensions, because say if you wanted to store the answers to these questions, okay? Say you wanted to store that, I want to save the answer to the same question, but I'm going to save it in a different coordinate. So if 0, 0 is, what is the name of the founder? Oops, no, sorry. This is all going to be 0, 0, 0, and now. So I've just added another bit over here. This was my single dimensions. This was my 1D. Now with an addition of another column, this becomes 2-dimensional. Okay. Okay, so now what I can do is, now before I was only having 1, 2, 3. Okay, consider it 0, 1, 0, 2, 0, 3. Now when I type 1, 1, 1, 2, and 1, 3, I have more options to look at. So I could store my answers, for example, Qaid, hey, awesome. Wuhan, red. Okay, Hmm. does it make sense? Yeah, I mean, but the 2D array, we can run it to like an infinite number, right? Like 0, comma, till wherever we want. Yeah, so when we're declaring this array, this is something which I would have to write. For example, I would have to do, say if I want to store something in element 0, 0, so this is how I would write it. And then inside I could store whatever I want to. And then similarly for the other element, I would have to say 1, 0. So on. It'll make sense to you once we start getting into the code of the quiz program. Okay. Okay. Hmm. All right. So let's proceed, and then if you have more questions, we can just take them there. So I am going to create my questions. Okay, my questions are not going to change. So I could use var, I could use let, but since my questions will remain constant, I don't want questions changing on and off. So I'm just going to use the constant identifier here. Okay. 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 Now, this will look a little strange because I'm not going to just use 0, 1, and 2. Rather, there's a very good way of declaring arrays in JavaScript, which allows you to actually use a name as a label. So instead of doing the 0, 1, 0, 2, 0, 3, I could just say questions and then get the first question by writing the word question in the index. And that will give me the question. So so my first array element would be question. And inside, I'm going to write, for example, what is
10 plus 10 question mark. Sorry, question mark. Okay, and for this question, my options would be 8, comma 10, comma 20. And the answer would be, for example, obviously the correct answer would be 20. Okay, does it make sense to you? Any questions till now? Not really. ठीक है, अच्छा ये कॉमास लगाना जरूरी है जब हम अरे के बीच में इस तरह से चीजों को डाल रहे हैं, तो ये जितने भी इसके एलिमेंट्स होंगे ना, इनको हमें कॉमा से सेपरेट करना है। ये मतलब ये जो आपको नजर आ रहा है ना, जो मैंने पहली चीज डिक्लेयर की, दिस इज माय फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। दिस इज अ 3-dimensional array. It's got a question, it's got an option, and it's got an answer. All right. Now, sir, you use two kinds of brackets up here. There's squared brackets and there is a curly bracket. So why is that? हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट वही, इसके बहुत तरीके हैं करने के सारे। मैं आपको एक और तरीका भी बाद में दिखाऊंगा कि जिससे आप इनको डिक्लेयर कर सकते हो, एक लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हो। इस तरह मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ज्यादा कंटेंट है, तो लाइन बाय लाइन में हमें फिर इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो मेन हमारी अरे का स्टार्ट और एंड है ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट से वो हो रहा है डिनोट, और जो हमारे एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं ना, वो हम लोग कर्ली ब्रैकेट से करेंगे इसके अंदर। Okay. अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम एक और ये बात, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो चलो इसी को लिख लेते हैं। क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन मिसाल 2 है, अगर तो वही वाले क्वेश्चन यूज कर लेते हैं जो कि मैं वहाँ कर रहा था एक्सेल शीट। Where did the first case of coronavirus appear? अच्छा, इसके बाद कॉमा लगेगा, and then we have options. Options में हम इसमें different options दे देते हैं, China, France, Pakistan. फिर कॉमा लगेगा, separating the data, and then answer में we can just write China. कोई क्वेश्चन मुझे बताओ, एक और तीन क्वेश्चंस डाल लेते हैं। What does HP stand for? What does HP stand for? HP stand for? Yeah. ठीक है, ऑप्शंस बताओ। I don't know. Hyperpower, Hewlett Packard. Power. And horsepower. Horse. Lewis. Answer हमारा हो जाएगा, our answer is going to be Hewlett Packard. So I guess Packard is with an E. Really? I don't think so. Is it? I'm not sure. Oh no, that's fine. HEWLETTPACKARD. It's PA. All right. अच्छा, चलो ये हो गया।
अब हम ये करते हैं कि चलो अभी हमने सिर्फ अरे क्रिएट की है इस So the curly bracket after the हाँ answer. हाँ हाँ वेरी गुड, सही बताया आपने, वेल स्पॉटेड। बिल्कुल सही पहचाना। अच्छा जी ये हो गया। अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये हमने Sir, क्वेश्चंस तो comma after Hewlett Packard in the answer. So answer Hewlett Packard, and then there should be a comma. क्या यहाँ का कह रहा है? Yeah. मतलब कॉमा यहाँ पे क्यों आएगा बेटा? यहाँ जो सेपरेट करने वाला है वहां आता है ना, तो क्वेश्चन कॉमा Sir, ऊपर भी ऑप्शंस तो कॉमा। लगाया है जो. पर कहाँ लगाया हमने? Oh, अच्छा अच्छा, all right, all right. Say. अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, डू यू नीड द पर्सन, यू नीड टू बी अच्छा ठीक ठीक। ओके ओके लेट्स गो नाउ। मुझे अभी पहले तो आप ये बताओ कि अच्छा अब बेसिकली हुआ ये सारे में, ये जरा सा गौर करना आप, यहाँ हमने स्टार्ट किया था अपना इंडेक्स ना, फिर हम इसको लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन रहेगा, राइट? अब ये जो हमारी पहली चीज थी ना जो हमने डिक्लेयर की है इधर, ये एंड हो रही है यहाँ पे जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। अच्छा क्योंकि यहाँ पे एंड हो रही है तो आई हैव टू यूज अ सेमी कोलन टू डिक्लेयर कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लॉक स्टार्ट हुआ था ये यहाँ पे जाके एंड हुआ है। अगर ये पूरा एक लाइन में होता तो जाहिर है ये लास्ट चीज होती जो अरे को क्लोज कर रही होती। अच्छा अब मुझे बताओ आप कि हमने ये इतने सारे डेटा जो है 3D एक अरे में डालनी है, तो हाउ डू वी गो अबाउट इट, व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग? चलो ये भी छोड़ो, पहले हम वो करते हैं, पहले हम अपने फॉर्म को ना मतलब हम अपने उसका वेट करते हैं कि हमारा फॉर्म ड्रॉ हो जाए, उसके लिए क्या यूज होगा? Document dot, no wait, यस it's DOM content loaded. यस यस, एक ऐड इवेंट लिसनर Okay, डालेंगे, add event listener, and then ठीक है, और फिर बिल्कुल वही करेंगे जो आपने बोला है, डॉम कंटेंट लोडेड, ठीक है। और इसके बाद हम कहेंगे कि एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर लो और उस फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ लोड क्वेश्चन, okay. ठीक है। मैंने इसको कहा है कि भाई आप जैसे ही ऑन हो तो जैसे ही ये सारा ड्रॉ हो जाए तो अब लोड अ क्वेश्चन कॉल्ड सॉरी लोड अ फंक्शन कॉल्ड लोड क्वेश्चन, और मैं यहाँ एक बना लेता हूँ फंक्शन। तो इस फंक्शन को सिर्फ चेक करने के लिए कि ये सारी चीजें चल रही हैं, लेट्स जस्ट अलर्ट एंड हे and see if everything's running as it should. Save. अच्छा ये हमारा बेसिक पेज नजर आ रहा है, क्विज क्वेश्चन क्वेश्चंस करेक्ट 0 of 0, ठीक है। It didn't alert है. अलर्ट लेकिन नहीं हुआ, वही मैं देख रहा हूँ। अच्छा, we never called out the function out there. नहीं फंक्शन को तो हमने यहाँ लिख दिया ना, लोड क्वेश्चन, So, but then we और didn't call it out in the HTML file now. मतलब क्यों चलेगा? HTML से तो हम नहीं कर रहे ना, कि HTML को तो हमने बता दिया कि quiz.js इससे अटैच है, तो वो तो शुरू में ही इसको सारे कोड को एग्जीक्यूट कर लेगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर लोड क्वेश्चन, एंड लोड क्वेश्चन नीचे था जहाँ मैंने अलर्ट हे किया हुआ है। एक मिनट, हम ब्रैकेट्स तो नहीं लगाने थे, नहीं। अच्छा यहाँ पे अब कोई इशू आ रहा है, देखते हैं क्या है। Expect element,
Missing after property ID. Syntax error expected as after property ID. ये कहाँ पे error दे रहा है? अरे में कोई एरर है, एक सेकंड, ये हमारा सब सही है। अरे के डिक्लेरेशन आई थिंक कोई इशू है। कॉन्स्ट क्वेश्चंस, question what is 10 plus 10 common options. अच्छा, अब समझ आया। हाँ, एक मिस्टेक हो गई सारे। मिस्टेक ये हुई है कि ये आप देख रहे हो कि हमने जो एरे के बीच में एलिमेंट्स हैं उनको हमने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। अब यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि देखो, हमने क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन रखा है, आंसर में भी एक ही एलिमेंट रखा है, लेकिन ऑप्शंस में हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। और जहाँ मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं ना, तो उनको हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स एडिशनली वो डिफाइन करने पड़ते हैं इस तरह से। अच्छा, हाँ, मेरा जहाँ तक अंदाज है ये शायद एरर दे रहा है वो, के करके देखते हैं क्या होता है। हाँ, चल रहा है, यही मसला था। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद तो हमारा ये फंक्शन भी चल रहा है। तो अब मुझे बताओ, हम क्वेश्चन को लोड किस तरह करेंगे, या आगे हम किस तरह पढ़ेंगे, पहले ये बताओ मुझे। हाउ विल वी मूव फॉरवर्ड? okay, so first of all we have हमने क्वेश्चन को एक आईडी दी पे, सॉरी h2 को एक आईडी दी पे वहाँ पे HTML में। वेरी गुड, यस। So आईडी इज क्वेश्चन। we'll हाँ, so we'll call it out by using document dot query selector, वेरी गुड, and yeah, question ठीक है। dot inner HTML, and should be replaced by questions, the constant questions. The constant questions. And this should run until the length of the, sorry, until questions equals to the length of the array. So we'll use questions dot length. ठीक है, वो ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अभी लूप में आइटरेशन में जाने से पहले पहले हम एक सवाल को पहले डिस्प्ले करके देखें कि वो किस तरह से अरे से हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने यहाँ लिखा, आपने यहाँ लिखवाया क्वेश्चंस। अच्छा, अब क्वेश्चंस में कौन सा क्वेश्चन, तो उसका हम यहाँ नंबर जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर देते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हम 0 की तरफ जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का मुझे अभी क्वेश्चन उठाना है ना, इसमें 3 एरियाज है ना, क्वेश्चन है, ऑप्शंस है और आंसर है। तो मुझे इसका क्वेश्चन उठाना है, तो मैं इसके बाद एक डॉट लगाऊंगा, क्वेश्चंस जो अरे है 0 एलिमेंट की डॉट कौन सी ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन।
All right. ठीक है, सही. तो एक सेकंड इसको रन करके देखते हैं. अच्छा, क्या प्रॉब्लम. अच्छा आ गया, सॉरी आ गया. व्हाट इज 10 प्लस 10? सही है, जबरदस्त. यही था ना पहला क्वेश्चन, व्हाट इज 10 प्लस 10. अच्छा. अच्छा, एक चीज जो हमें करनी है, हम हार्ड कोड तो नहीं कर सकते ना कि क्वेश्चन जीरो, और अगर हमें इसको किसी लूप में आइट्रेशन में भी डालना है तो वी कांट रियली से जीरो हियर. तो इसको कैसे ट्रैक करें क्वेश्चन को? What do you mean? क्या मतलब ट्रैक लुक, करें? इन लोड क्वेश्चन आई हैव जस्ट हार्ड कोडेड एवरीथिंग अप टिल नाउ. ये जो जीरो है, यानी पहला क्वेश्चन मैंने कह दिया जीरो दिखाओ. So this shouldn't be the case if I'm going to use any iteration or if I'm going to use any other method of tracking के कौन सा question अभी चल रहा है. तो उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? थोड़ा सा काउंटर वाली बात याद करो कि काउंटर में भी जैसे हम लोग हाउ डिड वी ट्रैक और ट्रेस के काउंटर कहाँ है अभी? काउंटर प्लस प्लस. हाँ, तो अभी तो ना काउंटर है ना कुछ है ही नहीं ना अभी तो. इट्स जस्ट एन array which has the questions, and now within that array we want to track the questions, the options, the answers. So how should we go about it? Let's start with by declaring a variable. ठीक है? So let's declare a variable called question number. ठीक है? And let's make it equal to 0. ठीक है? And instead of writing 0 here, now I can simply replace this with question number, which is obviously 0 initially. Okay? अच्छा. So कुछ समझ आ रहा है मैंने क्यों किया है, क्यों दिया है ये वेरिएबल? क्यों दिए ये नहीं पता, बट देन समझ में आ रहा है लाइक हाउ डज इट वर्क. हाँ बेटा, इसीलिए दिया है क्योंकि जैसे हम काउंटर को भी जीरो से इनिशियलाइज करते थे ना, काउंटर का वेरिएबल हमने एक बनाया था, उसको हमने जीरो दिया था, फिर हम उस जीरो से करते थे. अगर मैं रिवर्स में कर रहा था तो आई यूज्ड टू हैव इट ऑन 10 and then I used to decrement the counter variable, and then within the loop that thing was running, right? Because the loop was managing the count of the counter. तो इसी तरह we can manage the questions using a loop or iteration process, जिसमें क्वेश्चन को अब हम प्लस करेंगे तो जाहिर है क्वेश्चन आगे बढ़ेगा. अब मुझे जाके यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा ना 1 करो या 2 करो या 3 करो, वो ऑटोमेटिकली जो हम इस वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को प्लग कर रहे होंगे, इंक्रीज कर रहे होंगे, डिक्रीज, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रहा होगा ना. नाउ आई कैन सेफली रन I can safely run what you call a loop, and within that loop the questions would one by one keep coming depending on how I'm running the loop. सही है. तो अब एक काम करते हैं, अब हम ये करते हैं कि एक लूप चलाते हैं. लूप आपको याद है, हम फॉर का लूप यूज कर सकते हैं इसमें, लेकिन डू यू रिमेम्बर हाउ इट यूज्ड टू रन? या फिर एक काम करते हैं, we'll चलो. just add for before the function. अच्छा no, we'll add it after this. नहीं, वैसे तो उससे पहले ही होगा, लेकिन अभी मैं एक ऐसी टेस्ट करके देखना चाह रहा हूँ. अभी एक काम ये करते हैं कि बजाय कि हम अभी क्वेश्चंस, क्योंकि अभी तो हमें एक क्वेश्चन स्क्रीन पे एक वक्त में चाहिए ना. मसला यहाँ पे आएगा जब हमें ऑप्शंस बहुत सारे दिखाने हैं, क्योंकि ये 3 ऑप्शंस है ना.
So let's try to run a loop over here, and let's say for अच्छा एक काम और करते हैं, यहाँ पे हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ऑप्शन। ऑप्शन के नाम से मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको मैं भी फिलहाल 0 कर रहा हूँ। तो अब मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर ऑप्शन ऑफ फॉर ऑप्शन इक्वल्स टू 0 टू, अच्छा ये इसकी मैंने स्टार्टिंग बताई है कि मुझे पहला ऑप्शन चाहिए ना, फॉर ऑप्शन इक्वल्स 0 टू, और कहां तक चले, जब तक ऑप्शन डॉट लेंथ जो है वो अचीव ना हो जाए, ऑप्शन प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं भी सिर्फ स्क्रीन पे ना console डॉट लॉग करा के देख लेते हैं कि अरे के अंदर जो क्वेश्चंस सॉरी ऑप्शंस हैं वो स्क्रीन पे आते हैं कि नहीं। हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है क्या हुआ, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछो। अच्छा ये यहाँ, क्या है ऑप्शन डॉट? हाँ ये मिस्टेक हुई है, मैं वही सोच रहा था, मैं गलती हो गई यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली आएगा आपके पास क्वेश्चंस डॉट, सॉरी क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर डॉट ऑप्शंस डॉट लेंथ। Does it make sense now? Kind of thing, yeah. So length, like len can be used in place of length. हाँ ये उसका शॉर्ट वर्जन है, ये जो हम पहले लिख रहे थे ना इस तरह लेंथ, सही सही सही। लेकिन ये है कि अभी अच्छा, देखते तो हैं सबसे पहले अभी अभी बस मैं देखना चाह रहा हूँ ये ऑप्शंस हमारे सारे दिखाएगा कि नहीं उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो ये स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा, मैंने इसको अभी console डॉट लॉग करके आई जस्ट ट्राइड टू गेट देम ऑन द पेज। तो लेट्स सी व्हाट इट सेज, डॉक्यूमेंट रेंडर कार्बल टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर डॉट ऑप्शन इज नॉट अ फंक्शन, नहीं ये तो नहीं चला। अच्छा फिर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए जस्ट फॉर द टाइम बीइंग एक काम करते हैं, इसको कहते हैं ऑप्शन इक्वल्स 3 टू ऑप्शन लेस देन 3, ऑप्शन प्लस प्लस। so जब console dot log यूज करते हैं, so basically it's उप्स, running but it's ये भी saying नहीं लगाया। वो console डॉट लॉग यही है ना, इसमें ले आएगा ना हमारे डेटा को, ये जो नीचे विंडो चल रही। सही है। हाँ भाई देखो क्या ये सही दे रहा है कि नहीं दे रहा। 8 10 यही ऑप्शंस हैं पहले क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चंस के ही ऑप्शन है पहले वाले में। अच्छा अब सारे मैंने ऑप्शंस तो आ गए हैं, दिख रहे हैं आपको नीचे 8 10 20। जी सर। अच्छा अब एक मसला है, मैंने ये चला तो लिया है ऑप्शन फिशन, जी। there is an error here, ये options फिशन हो गया है। यार ये तो गलत हो गया, फिर भी ये चल रहा है, किस तरह चला है मुझे समझ नहीं आया। अच्छा ये तीनों दिखा रहा है वैल्यूज, इसको तो ये एक 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 ही एक, को 3 दफा रिपीट कर रहा एक ही को 3 दफा दिखा रहा है, वही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे console डॉट लॉग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डॉट ऑप्शन, है। ऑप्शन। सर ऑप्शन तो प्लस प्लस 4 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर भी तो प्लस प्लस होगा। नहीं आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है, सॉरी क्या कह रहे हो बेटा, फिर बोलना।
अभी तो सर एक फॉर अभी ऑप्शंस अभी तो पहले क्वेश्चन के ही मैं ऑप्शंस दिखाना चाह रहा हूँ ना तीनों। अभी तो एक के ही मैं चाह रहा हूँ ना कि स्क्रीन पे पहले तीन पहले क्वेश्चन के तो आए ऑप्शन सारे। यार क्या गलती हो रही है, console डॉट लॉग क्वेश्चन नंबर डॉट ऑप्शंस। अच्छा एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये मैंने लूप चला तो दिया है तीन, क्या मतलब मैंने हर चीज हार्ड कोड कर दी ना कि भाई ऑप्शन 0 से स्टार्ट होगा, बस तीन ही ऑप्शन इसमें रहेंगे और बस प्लस प्लस करते जाओ और ऑप्शन को निकाल के स्क्रीन पे दिखाते जाओ। अब ये चल तो जाएगा, काम मेरा चल रहा है इससे, लेकिन ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है प्रोग्रामिंग की, खासतौर पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग की। तो इसको अगर मुझे और बेहतर करना हो तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन somehow try to figure out what the starting of it is, and then I can say कि भाई उतना ही चलो जितने questions हैं, यानी जितने वो options हैं, और display the option। तो मैं इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देख रहा हूँ if I can achieve what I want to achieve। Let's see if it works। For option of questions, question number dot options, and then this I would just like it to show not the option, sorry, the option equals 0 है ना। हाँ हाँ अब ये सही दिखा रहा है। एक मिनट, 8 10 20। अच्छा सारिम देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा आपको। इसमें मैंने इसको कहा है कि मैंने जो एक वेरिएबल डिफाइन किया था ना ऑप्शन का, लेट ऑप्शन इक्वल 0, इसको मैंने कहा है कि भाई फॉर दैट वेरिएबल ऑप्शन जो कि 0 पे इनिशियली, और ऑफ क्वेश्चंस का मतलब है कि मैं इसको कह रहा हूँ कि आगे ना जो क्वेश्चंस का अरे है उसके अंदर ये एलिमेंट जो कि क्वेश्चन नंबर है उसके डॉट ऑप्शंस तक इसको चलाओ, जो कि 3 है। अच्छा मैंने इसमें एक और एलिमेंट ऐड किया है अभी ऑप्शंस में, चौथा। तो इसको ऑटोमेटिकली अब ये लेंथ, अब मुझे लेंथ लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, मैं इसको सिर्फ कह रहा हूँ कि भाई आपने ऑप्शन वेरिएबल को स्टार्ट करना है जो कि 0 पे है, और इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन क्वेश्चंस अरे, जिसका ये एलिमेंट और ये ऑप्शंस यहां तक जितने भी हैं उसके अंदर, ये आप इस वेरिएबल में स्टोर करो ऑप्शन के, और console डॉट लॉग में मैं सिर्फ उस वेरिएबल को डिस्प्ले करा रहा हूँ ऑप्शन के, एंड इट्स गोइंग टू डिस्प्ले द आंसर। तो मैंने अब 4 कर दिए थे ऑप्शंस, तो देखो अब मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ रहे, इधर 0 1 2 3 तक चलाओ, 4 तक चलाओ, वो ऑटोमेटिकली उसकी पोजीशन को खुद ही मतलब रीड कर रहा है कि कितने एलिमेंट्स हैं और उनको आगे जाके एग्जीक्यूट कर रहा है। मैंने वापस 3 कर दिए एलिमेंट्स। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इसको समझ लो, ये बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कंपेयर टू जैसे कि हम लोग काम चलाने के लिए कर तो लेते हैं, बल्कि एक और चीज भी हो सकती है इसमें। मैं अगर लेट ऑप्शन को भी यहाँ से हटा दूं और यहाँ जाके अगर मैं इसको कांस्टेंट ऑप्शन कर दूं, तो ये चलेगा। हाँ चल रहा है, चल रहा है, इट्स वर्किंग। अच्छा तो अब इसको हम उस पे ले आए अपनी स्क्रीन पे, अभी तक तो हम console डॉट लॉग ही कर रहे हैं, तो किस तरह लेकर आए स्क्रीन पे? एक और हेडिंग वहाँ पे लानी पड़ेगी I guess। नहीं लेकिन हमारे पास बल्कि तो नई डिव बनी भी तो है। ऑप्शंस है ना, मैंने ये देखें इसके लिए डिव यहाँ क्रिएट की थी शुरू में।
तो rather than putting in anything using header or whatever, we can do it from here also. तो क्या करना चाहिए? So again, I guess document.query selector होगा. यानी यहाँ से हटा दूँ ना, document dot query, लेकिन किस चीज की मैं वो query में किस चीज को select करूँ? उसको option वाली div को. ठीक है, जबरदस्त. Option है, options है, options, yeah. So options and then Dot inner HTML equals option, the constant option. अच्छा, लेकिन इसमें एक मसला होगा अभी, क्योंकि जब हम इक्वल कर रहे हैं और एक वक्त पे एक ऑप्शन ये पड़ेगा ना फॉर का लूप, तो ये उसमें सिर्फ एक ही चीज दिखाएगा या उसको बार बार अपडेट करता रहेगा? लेट्स सी क्या होता है अगर मैं इसको चलाता हूँ. कंसोल को मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि कंसोल हमने चेक कर लिया. वही हुआ जो मैं आपको कह रहा था ना कि वो तीनों वैल्यूज को लाएगा, लेकिन वो तीनों वैल्यूज को ना वो मतलब काइंड ऑफ लाइक अपडेट कर देगा उसी के ऊपर बार बार, उसी मतलब आईडी के ऊपर, वो जो ऑप्शंस की है ना डेव की. अच्छा. तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, क्या करें? आपके जहन में क्या आ रहा है, पहले आप बताओ, फिर मैं सोचता हूँ कि क्या किया जाए. So yeah, कर तो रहा है ये काम, लेकिन ये क्या हो रहा है, बार बार उसी ऑप्शन को ना ओवरराइड करे जा रहा है. तो उसने जो भी अब लास्ट नंबर था ना, वो हमें लास्ट दिखा रहा था, उससे पहले वो ये दो नंबर उस पर दिखा चुका है. इसके लिए क्या करें? तो आप बताएं क्या करेंगे. अच्छा जी. अच्छा, अब मैं पहली बात तो ये मैं ये सोच रहा था कि हम इनको बटन्स पे ही लेकर आए, और बटन जो है वो हमने वहां पे तो कोई ड्रॉ नहीं किए हुए. तो एक आसान तरीका तो है कि मैं तीन बटन बना दूं, जितने ऑप्शंस हैं तीनों को आईडीज दे दूं और तीनों को अलग अलग अपडेट कर दूं. सबसे आसान तरीका तो ये है मेरे पास, कि बटन वन की जो आईडी है या ऑप्शन वन आईडी बटन वट दे के उसमें मैं हर एक में अलग अलग इसको ऐड करा दूं. बड़े आराम से हो जाएगा. बस ये है कि मुझे हर बटन के लिए अलग अलग लाइन लिखनी पड़ेगी. समझ आ रहा है? वी कैन डू दैट वेरी इजीली. और जाके इधर फिर आप बटन को ना डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज करके बटन को फिर अपडेट भी कर लोगे. अच्छा, ये तो बड़े आराम से हो जाएगा. अब अगर हम इसको प्रोग्रामेटिकली करें, जिसमें हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बटन भी डिक्लेयर कर दें स्क्रीन पे, तो वो ज्यादा तो अच्छी चीज नहीं होगी? होगी. ट्राई करते हैं इसको. मैं ये So डिलीट. what kind of buttons? Radio buttons? नहीं, यही वाले जो रेगुलर आपके बटन्स होते हैं, अच्छा. ये जो डायलॉग विंडोज वगैरह में खुलते हैं, रेक्टेंगुलर बटन्स. वो बाद में फिर आप सीएसएस यूज करके उनके बदल सकते हो शेप्स जो भी करना. अच्छा. अच्छा, एक मसला तो ये है कि एक काम करते हैं, को इसका नाम क्या है, डिफ का ऑप्शंस. ठीक है. अच्छा, अब हम करेंगे ये अपना सारे क्वेश्चन नंबर 0 हमने किया हुआ, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ. अच्छा, करते हम ये हैं कि हम ये करते हैं कि हम ये तो हमें करना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और हमें वो डिफ जो है ना उसको तो पकड़ना है ही है. क्या क्या नाम है उसका, ऑप्शन या ऑप्शंस? ऑप्शंस है ना. हाँ. अच्छा, लेकिन बजाय कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको बोलूं कि डॉट इनर HTML या व्हाटएवर, मैं इसको इस पूरी चीज को ना एक वेरिएबल से अटैच करना चाह रहा हूँ, ताकि मुझे ये पूरी लाइन बार बार ना लिखनी पड़े, ये डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट ऑप्शन. उसके लिए मैं मिसाल है एक चीज कर सकता हूँ, आई कैन राइट कांस्टेंट
and I can say I can say options equal to document dot query selector. अच्छा, अब होगा क्या, मैंने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया ऑप्शंस के नाम से. ये जो कांस्टेंट है ना, जब इसके अंदर बेसिकली हमने ये पूरी चीज हार्ड कोड कर दी है. और ये चीज क्या कह रही है, इट्स सेइंग कि गो टू द HTML पेज, लुक फॉर एन एलिमेंट व्हिच हैज एन आईडी ऑप्शंस. ठीक है. अच्छा, अब होगा क्या कि दिस ऑप्शंस इज नॉट एन ऑर्डिनरी वेरिएबल एनीमोर, जैसे कि हम बनाते हैं एक ऑर्डिनरी वेरिएबल. रादर दिस इज नाउ व्हाट यू कॉल इट, बेसिकली एन ऑब्जेक्ट. तो आप देखना कि अगर मैं इसको यहाँ कॉल करूंगा ना, ऑप्शंस डॉट, चाहे कुछ दिखा तो नहीं रहा है वैसे यहाँ, पर मैं समझता हूँ अगर मैं इधर लिखूं इनर, अच्छा अब दिखा रहा है, पहले नहीं दिखा रहा था. अच्छा, मैंने अभी बस ये किया है, अभी एक ट्रायल करके देख रहे हैं. ऑप्शंस जो ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर क्रिएट किया था, उसकी डॉट इनर HTML को हेलो कर रहा हूँ. लेट्स सी इफ इट वर्क्स. अभी मैंने कोई और खास काम नहीं किया है, लेकिन नहीं, ये तो नहीं चला. ऑप्शंस ही था ना जो आपने मुझे आईडी बताई. हाँ, यही ऑप्शंस है यार, लेकिन ये तो सिर्फ डिव है ना, इसके अंदर हमने वो तो डाला ही नहीं अभी कोई पेज या बटन जिसके ऊपर ये जाके उस चीज को शो करे. चेक काम करते हैं को. अगर मैं हेलो ऐसे लिखता हूँ तो क्या होता है. नहीं, अभी भी कुछ नहीं. अच्छा, चलो हम एक काम करते हैं, पहले हम इसके ऊपर कुछ डिफाइन करते हैं. यानी कि हम एक रन टाइम पे ना, जैसे अभी हम रन टाइम पे हम जावा को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. तो रन टाइम पे let's declare something on the screen which is like maybe an h2 tag. So let me see if I can do this from here. h2 and So can you continue this later, क्योंकि 2 बजे मेरी मिस्टर अहमद के साथ क्लास है. I want to take a अच्छा, break in between. ठीक है, तो ये करते हैं Probably in कि the evening या कल. हाँ, मैं इसको थोड़ा सा खुद भी आगे बनाने की करता हूँ कोशिश, पर डिलीट कर लूंगा, फिर जरा सा आपको और बता दूंगा. ठीक है, चलो, सही है. इवनिंग में alright. कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट लेट मी नो. थोड़ा सा और करना है Alright. काम हमें भी. काम तो बहुत करना है, लेकिन ये कि एटलीस्ट क्वेश्चंस और ऑप्शंस में चाह रहा हूँ कि वन बाय वन आना शुरू हो जाए स्क्रीन पे, तो फिर वी विल सी हाउ टू वर्क विद द आंसर ऑप्शंस. सही. ठीक है, चलो. ठीक है Alright बेटा, then. तो ये मतलब चल गई क्लास? हाँ, इतनी देर आप सही कह रहे थे. It works. 40 minutes से ज़्यादा चलती है. It worked about 1 hour 20 minutes or हाँ 15 हाँ, minutes. चल गई है, चल गई. इंटरेस्टिंग. I guess Zoom वाले भी because of this virus thing वो extended lessons दे रहे हैं. हाँ, इससे पहले तो मेरा वही 30-40 मिनट के अंदर खत्म हो